Hello friends, it gives me an immense pleasure to welcome you all in the world of physics. Let me introduce myself. I am Sonali Rathi. I have done my masters in physics along with a BA degree. I have a 3 years of teaching experience and currently I am working as a junior college teacher. So as we all know, this 2020 has so many changes. So out of those all the changes, one change that you have to face is newly updated syllabus of 12th MS Board. So my motive to come up is just to provide you a guideline regarding newly updated syllabus of physics for the 12th board. So guys, I'm not gonna write here the entire chapters that has been already given in the textbook, and the link of new textbook of physics is given in the description below. So what I want to discuss here is, it's my personal observation that so many students consider this physics as a kind of boring or the toughest subject. So many even has the phobia of physics. But this is all misconception. In order to understand this subject, you need to go to the depth. Physics को समझना है तो concepts को practically समझना बहुत ज़रूरी है. This physics is all based on the real life situation. In order to understand the physics, you need to follow just 3 mantras. Those 3 mantras are, the first one is observation. So your observation should be as keen as possible. The second one is imagination. So imaginative skill should be as strong as possible. And the third one is experiment. You can do the lots of experiments even at a home without using any kind of well-developed lab. हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो डिफरेंट होता है, फिजिक्स का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है. सिंपल एग्जांपल विल टेक हियर. इफ आई आस्क यू टू पुश द वॉल, इन ऑर्डर टू पुश द वॉल यू अप्लाई अ टन ऑफ फोर्स. सो ऑब्वियसली यू हैव डन अ वर्क. फिजिक्स में वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब वॉल को पुश करने के लिए आपने बहुत सारा फोर्स लगाया है, सो ऑब्वियसली आपने वर्क किया है, बट इतना फोर्स लगाने के बाद भी वॉल डिस्प्लेस नहीं हुई. सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल इज 0, एंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल इज 0, वर्क डन इज 0. ये है फिजिक्स का पर्सपेक्टिव. आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपने वर्क किया है बिकॉज यू हैव अप्लाइड लॉट्स ऑफ फोर्स, बट अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिक्स एज द डिस्प्लेसमेंट इज 0, वर्क डन इज 0. सो ये सारी चीज़ें अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिजिक्स बोरिंग नहीं है ना फिजिक्स टफ है. यू विल डेफिनेटली नेल इट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम with a fresh chapter of 12th physics from the new textbook and we'll do the point wise discussion. So let me declare the name of that chapter, that is magnetic material. So until then, stay studious, stay curious. Thank you.